That's good. That's good. That's good. Let me proceed with the discussion now. Well, sequence and series we picked up, and we defined what are sequences and series. I don't need to revisit as such. Then we talked about progression. Progression are the specific sequence which progress in certain manner. Then we have the series. Series is nothing but the terms of the progression or series connected by plus sign, so that we add them up all is what is known as series. So specifically we need to deal with the progression in this chapter. That's why there are three progression we'll be dealing with: AP, GP, and HP, arithmetic progression, geometric progression, and harmonic progression, right? So we picked up arithmetic progression to begin with. We defined in two different manners. It is so convenient to understand that the arithmetic progression is nothing but it starts with the particular term, and then every succeeding term is got by adding d to it, a common difference to it. So you can see that हर next term जो होगा वो d add करके आता जाएगा. So a plus d में d add किया, a plus 2d, a plus 3d, and so on. So you can understand that the nth term is gonna be, because the first term में no d is being added, second term में d is added once, so third term में d is added twice, fourth term में d will be added thrice. So nth term में d will be added n minus 1 times. That's why the nth term would be a plus n minus 1 d, as I told you in the previous term. अरिथमेटिक सीरीज वुड बी नथिंग बट यही सारे टर्म जो हमने कॉमा सेपरेटेड लिखे हैं, इसी को अगर प्लस साइन से कनेक्ट कर देंगे तो व्हाट आई विल गेट इज नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बट अरिथमेटिक सीरीज. तो दिस इज द nth टर्म विच आई एम कॉलिंग द लास्ट टर्म इज nth टर्म. लास्ट टर्म को tn को l भी कह सकते हैं, राइट, बिकॉज द सीरीज कंटेन्स n टर्म्स. तो l स्टैंड्स फॉर लास्ट, यू नो. एनीवे, मैंने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा, द लास्ट टर्म फर्स्ट एंड द सेकंड लास्ट टर्म सेकंड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड द फर्स्ट टर्म लास्ट. You can you checked out in the previous term, that is the columns are adding up to the same value every time. चाहे ये column लो, चाहे ये column लो, चाहे ये column लो, they'll be adding up to the same value, because यहाँ से यहाँ तक जाने में, as I told you, d elevate हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में d subtract हो गया, यहाँ d add हो गया तो यहाँ subtract हो गया, यहाँ तक जाने में d add होगा तो यहाँ से यहाँ तक जाने में d subtract होगा. जो इसका गेन होगा वो इसके लॉस से कंपनसेट हो जाएगा, इसलिए वर्टिकल कॉलम विल एड अप टू द सेम वैल्यू. एंड व्हाट इज दैट वैल्यू? दैट वैल्यू इज 2a plus a 2a plus n minus 1d. How many times that would be repeated? Of course there are n terms, that's why n times it will be repeated, and LHS में s plus s will be 2s. That's why 2s is equal to n times of this common addition of all the columns, and I divide by 2, I get the sum of the series as n by 2 2a plus n minus 1d. Since I said that last term can be called L, nth term, that is last term, if nth term is the last term, then it is called L. तो मैंने a, इसमें से a n minus 1d को L कह दिया, तो 1 a is left. That's why we can write the sum in a compact manner as s is equal to n by 2 a plus L as well. Appreciate that. So let me start the class by a question, you know, and you work it out, and then we'll proceed, right? The question goes like this, so I'll write it myself. It is not the screenshot that I have available. So I will write the question myself. So it will be, so it is a A1, A2, A3, A4 up to A24 are in AP. I don't know what is the common difference, because first term is A1, I am sure, but common difference is not known to me. And also it is granted that is A1 plus A5 plus A10 plus A15 plus A20 right, plus A24 is adding up to 225. Okay. Okay. Yes, sir. Then find
S is equal to A1 plus A2 plus A3 plus A4 up to A24. Yes. Any answer? हाँ जी. कर रहे हैं. Okay, okay. Work it out. Yes. Any answer? हाँ जी. Answer is 900. I haven't checked out. Let's see. Yes, so my answer is 900. Who is speaking? So Karthik. Yeah, looks like it is correct answer. Looks like it is correct answer. Good. Good. So, well, I can work it out comfortably. It is A1 plus A5 plus A10 plus A15 plus A20. 6 terms, 24 terms की series है. Out of which 6 term का sum is granted to us as 225. Now, you can see that. See, if I write A1, let me work it out. A1 plus A1 comma A2, just write the progression first. A3, A4, A5, A20, A21, A22, A23, A24. Let me shift it slightly so that I can place A24 also, and not plus, comma, separated. A23 and comma A24. Now you can see in going from here to here there is the addition of D, 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 or something like that. Agree? So in going from A1 to A5, in going from A1 to A5, how many D's have been added? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार.
4 times D has been added. And in coming down from A24 to A20, A24 to A20, you can see that एक बार D subtract होगा, एक बार D subtract होगा, एक बार D subtract होगा, एक बार D subtract होगा. तो इसमें से 4 times subtract होकर A20 बनेगा. तो what I'm going to claim is ये subtract होकर D बनेगा. Sure or not? So what I'm going to claim is, justify my claim please. I'm gonna write this. A1 plus A24. A1 plus A24, that means A1 और A24 का जो सम होगा, क्योंकि ये 4 बार D ऐड होके A5 बनाया, तो दिस विल बी 4D मोर देन A1, तो A5 और A20 का सम भी उतना ही होगा. द रीजन इज A1 से A5 तक जाने में 4 टाइम D ऐड हुआ और A24 से A20 तक आने में 4 टाइम D सब्ट्रैक्ट हुआ. तो will you confirm this, that same sum will be equal to A5 plus A20? All of you confirm this? All of you confirm this? No big deal about this at all. I wrote it very thoroughly over here. I guess you should be able to appreciate that. A1 से A5 तक जाने में, A1 से A5 तक जाने में गेन कितना हुआ? What is the gain? Gain of 4D. और A24 से A20 तक आने में लॉस ऑफ, बोलिए, लॉस ऑफ 4D हुआ. तो जब इसके गेन ने इसके लॉस से बैलेंस कर लिया, तो विल द सम अप टू सेम वैल्यू और नॉट? All of you understand this? Right, right. In a similar manner, यही होगा A10, A1 से लेके A10 तक जाने में कितने D का एडिशन हुआ? गेन ऑफ 9D. 9D का एडिशन होगा कि नहीं? गेन ऑफ 9D. बोलिए अग्री और नॉट? गेन ऑफ 9D. मैं क्लेम करता हूं कि A1 plus A24 will also be equal to A10 plus A15, because A24 से A15 तक जाने में लॉस ऑफ 9D होगा कि नहीं? लॉस ऑफ 9D होगा कि नहीं होगा? विल इट बी और नॉट? तो यहाँ पे गेन, यहाँ पे लॉस से बैलेंस हो जाएगा, एंड दस ये पेयर वाइज दे विल बी इक्वल. दैट इज द पेयर दैट आई रोट. Right, let me rub it off all the additional drawings. It is not required. Once you understood this, then it is not required at all. Let me write only the relevant part. So this is what. So that means out of these 6 quantities whose sum is granted, right, whose sum is granted, are you getting the point or not? A1, A5, A10, A15, A20, A24. So all 6 have been put in 3 baskets, pair of 2 numbers, and they are equal. All 6 का सम क्या है? अब ये मैं इसको क्या लिख सकता हूं? Symbolically I can write it as A plus L, YA plus L, because A1 को A कहेंगे फर्स्ट टर्म, तो A24 को द लास्ट टर्म GP को L का, AP को L कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बोलिए अग्री और नॉट? तो ये A plus L हो गया, तो ये भी A plus L, ये भी A plus L हुआ कि नहीं हुआ? सब A plus L के बराबर हो गए. Where A is the first term, L is the last term. Okay. Now understand that sum of this and this is equal to 225, but all 3 are equal. So will this amount to, will the sum A1 plus A5 plus A10 plus A20, ये सम जो दिया है, 10 plus A15 plus A20 plus A24 will be 3 times of A plus L or not? Will it be 3 times of A plus L or not? Yes. So it is 225. It is 225. That's why A plus L I get as what? A plus L I get as 225 by 3, and that is 75. 75. अब now you know the sum of the series. Sum of the series is A1 से लेकर A24 तक का सम पूछा गया था. Sum of the series is n by 2 A plus L. It is so convenient. What is n? N for my case is what? N is equal to 24. There are 24 terms or not? अब देख सकते हैं there are 24 terms in the AP. Can you see that? Because we are finding from A1 to A24, and thus you can see that the sum which is required is A1 plus A2 A plus A3 down to A24. 24 term का sum क्या होगा? n by 2 A plus L, and n by 2 is 24 by 2, and A plus L we have got as 75. So that is 12 into 75, that is 900. Yes. Happy?
कोई डाउट? No doubt. Okay. Now, let me proceed to a small article. You can call it an article, you can call it an application. I hope you have noted it down, right? You can call it an article, you can call it a small, very, very small discussion. In the article, this called Sum of Natural Numbers up to n. Sum of natural number up to n. It's a small article, very small addition, I guess. No big deal. So, if I want the sum of natural number up to n, let's denote it by s. So, it is going to be 1 plus 2 plus 3 up to n. Isn't it an AP? Isn't it an AP? With what? With first term a as 1 and common difference as 1. So, it is so convenient, and number of terms are n after all. So, that is why the sum would be n by 2, 2a plus, yet n by 2a plus l likh lo. A plus L, okay, and thus it is simple n by 2 n plus 1. So, this is the sum of the natural number up to n plus 1 by 2. Any doubt whatsoever about it? No, sir. Not at all. Not at all, I guess. Sum of the natural number up to n. Right. So, let me proceed to the next question. Right. And let's do it. Okay. Can see this question? 2011 it was asked. Yes, sir. Work it out, please. Yes.
I hope you are comfortable with the symbol summation. All of you are comfortable with the symbol summation? No? ना स्टैटिस्टिक्स में होता था, मतलब दैट मीन्स आई की वैल्यू 1 से लेकर पी तक ऐड किया जाए, मतलब इट इज सीरीज बेसिकली, पी टर्म की सीरीज. अगर एस एम लिख रहे हैं तो एम टर्म की सीरीज, एंड एस एन लिख रहे हैं तो एन टर्म की सीरीज. इट इज नथिंग बट, आई मीन व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? इफ आई एलाबोरेट इट, इफ यूर summation sp, you know, is equal, oh, I mean, sorry, sp is equal to, they are writing sp is equal to summation, ऐसे बोलते हैं इसको, summation I is equal to 1 to p ai, राइट. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ a1 ai, इसका मतलब हुआ a1 प्लस a2 प्लस a3 डाउन टू ap, you know, this is what it is. That means p term की series, nothing else at all. So it is not a big meaning. Sir, Yes, so is the answer 9? haven't worked out. Let's see. Okay, I'll work it out. Looks like yes. Answer is 9. But other people, okay, let me work it out. Don't get confused about it, you know. That is the word that is written sp is equal to summation, that is small p, I is equal to 1 to p ai is nothing but basically ap. It is written in short. तो i को आप डालते चले जाइए, वैल्यू कब तक 1 से लेकर p तक एन लिख दीजिए सम के फॉर्म में. दिस मीन्स समेशन. तो इट विल बी, जब 1 डालेंगे तो a1, जब 2 ब्लैक करेंगे तो a2, a3 अप टू ap, you know.
अगर SP is this, तो what is gonna be SM and SN? You know that very well now. SM will be nothing but A1 plus A2 down to AM. SN will be equal to A1 plus A2 down to AN, whatever they stand for, right? And it is granted that M is equal to 5N, you know, it is granted. Now, come to think of it. Let us say that the series has the first term T1 as small a and the common difference D, you know, common difference D. Common difference D. If I call this common difference is D, you know. So you know that A1 को ही हमने basically A कह लिया है, right, for the sake of calling it so that things are convenient, no big deal about this at all. So what do we, it is given to be 3, I am so sorry. It is given to be 3, first term is 3 and common difference is D, you know. So what is SM gonna be? SM gonna be m by 2 twice of A, so 2 into 3 plus m minus 1 into D, which can be written as, because m is equal to 5n, that's why it can be written as 5n divided by 2, 6 plus 5n minus 1 into D. Am I correct? Sn will be equal to n by 2, 2 into 3 plus n minus 1 into D. So I leave in terms of n itself, so it is n by 2, 6 plus n minus 1 into D. Okay. They are saying that Sm upon Sn does not depend upon n. तो मेरे को कॉमन डिफरेंस मिलना चाहिए उससे. Sm upon Sn, which is gonna be this upon this, so that is 5n upon 2 in bracket 6 plus 5n minus 1 into D. Am I correct? Right. Upon, let me do it nicely, upon, over here is n by 2, 6 plus n minus 1 into D. Am I correct? Right? Okay. You can see that n by 2 gets cancelled off, n by 2 gets cancelled off, you know, and n to 2 gets cancelled off. I get this is equal to 5, you know, and 6 minus D, n को मैंने separate कर लिया, plus 5nd, 5nd upon 6 minus D plus ND. अब आप सोचिए कि ये n से कब इंडिपेंडेंट होगा. दे आर सेइंग दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन n एट ऑल. ये कब n से मेरा इंडिपेंडेंट होगा? When will it be independent of n? कब ये n से इंडिपेंडेंट? दो ऑप्शन है मेरे पास बेटा, दो ऑप्शन है मेरे पास. या तो मेरा d 0 हो जाए. अगर मेरा d 0 हो जाए तो ये टर्म और ये टर्म की मीनिंग खो जाएगी. देयर विल बी नो मीनिंग ऑफ दीज टू बिकॉज d इज 0 तो मल्टीप्लाइड बाय 0, तो n विल डिसअपियर फ्रॉम द रेशियो. n डिसअपियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? n रहेगा ही नहीं इसमें. ये तो इन लोग कह रहे हैं कि n पे डिपेंड नहीं कर रहा है. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन n. तो एक ऑप्शन तो मेरा बहुत सिंपल है भाई कि d को 0 कर दें. पर वो ऑप्शन ये है कि फिर वो मेरे को एक जेन्युइन जीपी नहीं देगा. d इज इक्वल 0 इज नॉट जेन्युइन जीपी. इट विल कीप ऑन रिपीटिंग. अगर कॉमन डिफरेंस 0 होगा तो सारे टर्म बराबर हो जाएंगे भाई. फिर कहाँ के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? फिर प्रोग्रेस कहाँ कर रही है? प्रोग्रेस करना चाहिए ना. इट हैज टू प्रोग्रेस और नॉट. अगर प्रोग्रेस करना है तो डी को 0 नहीं लेना. प्रोग्रेशन का मतलब प्रोग्रेस करना. प्रोग्रेस तो करेगी नहीं. तो दैट्स व्हाई व्हाट आई से इज डी इज इक्वल 0 इज अनएक्सेप्टेबल टू मी.
d इज इक्वल 0 इज अनएक्सेप्टेबल, तो मैंने d इज इक्वल 0 को अनएक्सेप्टेबल मान लिया, रूल आउट कर दिया। तो क्या और कोई ऑप्शन है? यस, मेरे पास ऑप्शन है। अगर माई d बिकम्स इक्वल टू 6, यू नो, इफ d बिकम्स इक्वल टू 6, अगर d मेरा 6 हो जाए, अगर कॉमन डिफरेंस मेरा 6 हो जाए, तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। देन आई विल बी लेफ्ट आउट विद 5 nd अपॉन nd, एन कैंसिल हो जाएगा, एन से इंडिपेंडेंट हो जाएगा कि नहीं? अगर d मेरा 0 होगा, इफ d इज इक्वल टू 6, तो इट विल बिकम इक्वल टू व्हाट? इफ फॉर d इज इक्वल टू 6, रादर हम लिखते हैं फॉर d इज इक्वल टू 6, दिस इज गोना बिकम इक्वल टू व्हाट? 5 टाइम्स ऑफ 5 nd अपॉन nd, एन कैंसिल हो जाएगा, विल एन गेट कैंसिल्ड ऑफ और नॉट? एंड oh I'm so sorry, and cancel हो जाएगा, and it will become 25. Will it be or not? So understand that. So this is a much better choice, and it is the only choice rather, I must say, because d is equal to 0 is hardly any AP. That's why common difference is 6. First term is 6. तो सेकंड टर्म क्या होगा? इन्होंने पूछा व्हाट इज a2 ऑल अबाउट, तो a2 क्या होगा? तो a2 जो मेरा होगा, the second term, a2 is nothing but second term. Second term is after all first term plus d. First term is 3 and the common difference is 6. So that is 9 is the answer. Sure? कोई डाउट, कोई शक? Yes? Have you all understood this? Sir, if we put d is equal to 7, sir, then sir, answer will be different. अगर d इक्वल 7 डाल देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आप देख लीजिए, यहाँ पे आएगा -1 प्लस 5 nd अपॉन nd के, n कैंसिल हो पाएगा? No, sir. तो कैसे n से इंडिपेंडेंट हो पाएगा भाई? n से इंडिपेंडेंट कैसे हो पाएगा ना? n नहीं आना चाहिए फाइनली। दिस इज व्हाट, should we proceed to next question? Yes, sir. Okay. A pack contains n cards numbered from 1 to n. Two consecutive numbered cards are removed from the pack, and the sum of the numbers on the remaining card is 12, 24. If the smaller of the number on the removed card is k, then k minus 20 is equal to. One hint I can afford to give you so that it facilitates the working process. All the answer to this kind of questions will come between 1 and 9, because 0 and 9, because they are integer type questions. इसीलिए k minus 20 पूछ रहे हैं, because definitely the value would come between 0 to 9.
Very simple question. You can see that Sir, is the answer 5? 5 is the correct answer. Okay, sir. 5, good. See, the cards are numbered from, they're not playing cards, they are simply piece of paper हमने काट लिए हैं, उसमें 1 2 3 4 up to n लिख दिया है और उनको रख दिया उसमें से कोई दो कॉन्जिक्यूटिव पेपर उठा लिए गए और बाकी सबको किसी ने सम किया, वो सम जो है 1224 आया. सो आई कैन से दैट, आई मीन 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to n, whatever the card number may be, में से दो कार्ड उठाए गए हैं. कौन दो कार्ड्स? एक उठाया गया है के, स्मॉलर कार्ड, स्मॉलर नंबर इज के, तो के स्मॉलर नंबर है तो उसके बाद वाला कौन होगा? के प्लस 1 होगा. श्योर और नॉट? तो इनमें से अगर के और के प्लस 1 को हटा दिया गया तो कहना सम 1224 आता है. ये इनका स्टेटमेंट है. कोई बात नहीं, आता होगा. Now look at this. The sum of natural number I told you just now. I don't have to talk about it again. N by 2 n plus 1. Sure or not? So it is the sum of the natural number up to n. That's why it is n into n plus 1 by 2 minus 2k plus 1 in brackets. Rather 2k plus 1 क्यों? 2k लिखिए आप. Minus 2k, अब 1 को उधर सेंड कर दिया, इज इक्वल टू 1225. Thus 2k is equal to check it out, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया 2450, isn't it? तो n plus 1 minus 2450 upon 4k. Sure? Sure. Now, you have to apply your common sense here. You have to apply your common sense here. अब k is equal to rather 2k is equal to upon 2, तो k is equal to this, you know. Now, you have to apply your common sense. मेरे को n एक ऐसा पिक करना पड़ेगा जो नंबर उसके कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट -2450 should be divisible by 4. क्यों divisible by 4 होना चाहिए? क्योंकि k itself should be what? K itself should be a natural number. Should it be a natural number or not? तो ये नेचुरल नंबर हो, इसके लिए जरूरी है कि n की वो वैल्यू पिक करें जो n plus 1 मल्टीप्लाई होने के बाद 2450 सब्ट्रैक्ट करें तो वो 4 का मल्टीपल हो. नाउ माय ऑप्शंस आर आल्सो लिमिटेड. वैसे तो बहुत हो सकते हैं पर माय ऑप्शंस आर लिमिटेड फ्रॉम वेयर टू वेयर. बोलिए 20 से लेके 29 तक ही है मेरे ऑप्शन. क्यों 20 से लेके 29? n की वैल्यू क्यों 20 से लेके 29 है? द आंसर इज कॉमन सेंस. n की वैल्यू जो होगी वो 20 से लेके 29 के बीच में रेंज करेगी. वाई? बिकॉज माई आंसर k - 20 शुड कम आउट टू बी बिटवीन 0 to 9. तो मैंने ट्रायल एंड एरर किया. 20 डाला, 20 into 21, 20 into 21 minus this will not be divisible by 4. So keep on trying, and finally what comes out to be is कि this for n is equal to 25. For n is equal to 25, this happens, you know, and this happens very well. For n is equal to 25, what happens is when you plug it back, so k will come out to be what? 25 into 26 minus 2450 upon 4. And what is this? This is, you can check out, is that is, it comes out to be 2550 minus 2450 upon 4. Right? And you can see that this comes out to be 25. And thus, my k minus 5 would be equal to, can
slide it over here if you so wish. Oh my god, everything is not getting selected. चलिए कोई बात नहीं, I will anyhow do it. Rub it off and write it as for n is equal to 25. So this is what I get to see, which is 25. So thus k minus 20 would be nothing but 5. 5 is the answer. Have you all got the point very clearly? Very simple question. And they are being asked in JEE Advanced. You can understand that how simple it is. So no big deal about this examination, except the fact that only problem is that कि जब आप किसी टॉपिक को करते रहते हैं उस टॉपिक में पूरे इन्वॉल्व रहते हैं, राइट? तो इसलिए नॉर्मली क्या होता है कि व्हेन क्वेश्चंस आर रैंडमली प्लेस्ड इन अ क्वेश्चन पेपर, तब चीज़ें इतनी कन्वीनियंट इसलिए नहीं होती बिकॉज यू आर नॉट ओनली कंसर्न विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक. उसमें सारे टॉपिक क्वेश्चन होते हैं. अदरवाइज अगर इंडिविजुअली देखें तो टॉपिक को जब अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो उस क्वेश्चन को करना मुश्किल नहीं होता. इट इज सो कन्वीनियंट. ओके, लेट मी गो ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Suppose that all the terms of arithmetic progression are natural numbers, and if the ratio of sum of the first 7 terms to the first 11 term is 6:11, and the 7th term lies between 130 and 140, then common difference of the AP is. It is even more simple. Yes. Look at that. The sum of first 6 term would be, let me work it out. The sum of first 6 term would be, what is the sum formula? That is n by 2, 2a plus n minus 1 into d. Okay. So this would be nothing but 6 by 2 2a. One sec, hold on. First 7 terms, sir. First 7 terms. Sorry, Yes. I'm so sorry. First 7 terms they are saying. First 7 terms, that is 7 by 2, 2a plus 6d. Okay.
Does anything bother you? Not at all, right? And S11 would be nothing but 11 by 2, 2a plus 10d. They are given that ki S7 upon S11 is equal to 6 by 11. So I get the equation very comfortable. What equation? This upon this, 2 will get cancelled out. Now I am writing 7 upon 11 into, I mean, you can continue writing like this. इसी में लिख लो चाहो तो 7 2a plus 6d, 6d upon 2a plus 10d is 6 by 11. Now, you can cancel whatever is getting cancelled off. 11 gets cancelled off, and you get to see that what do you get to see? 14a plus 42d is gonna be 12a plus 60d. Implies that, pull it out over here, implies that 2a is equal to 60 minus 42, that is 18d, and a is equal to 9d. Am I correct or not? This is what I get. Yes, sir. Right? A is equal to 9d. Now, what is A7 gonna be equal to? This, look, Plus 6d. yeah, and the 7th term lies between 130 and 140. So 7th term lies between 130. So A7 is gonna be A plus 7, A plus 6d. A plus 6d is gonna be what? 15d. That is 9d plus 6d is 15d. 15d lies between what? 130 and 140. ये 130 और 140 के बीच में लाई करता है. 130 और 140 के बीच में लाई करता है. आप खुद बताएं अब मेरी बात को कि शुरुआत में इन्होंने कह दिया था कि भाई ये जो सीरीज है वो सीरीज किसकी है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ नेचुरल नंबर है. अगर नेचुरल नंबर की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसका फर्स्ट टर्म भी नेचुरल नंबर होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस भी नेचुरल नंबर होना चाहिए. नहीं तो अगर नेचुरल नंबर नहीं हो तो जैसे ऐड होगा वो नेचुरल नंबर से वो हट के कहीं और चला जाएगा. श्योर और नॉट? So thus what I need to seek is, I need to seek the d will be lying between 130 by 9 और 140 by 9. तो 130 by 9 और 140 by 9 के बीच का नेचुरल नंबर मेरे को पिक करना पड़ेगा. 130 by 9 अगर हम देखें तो I mean how much it comes out to be? I mean let me use the calculator because it will do the job faster, right? So 130 upon 9 will come out to be 14.44. 14.44 तो बड़ा होना चाहिए और 140 by 9 तो 140 by 9 तो 140 डिवाइड बाई 9 15.55 से छोटा होना चाहिए. 15.55 से छोटा होना चाहिए. कैन यू सी दैट माई कॉमन डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 15 और नॉट? भाई नेचुरल नंबर इनके बीच में क्या है? Yes, sir. तो नेचुरल नंबर इज गोना बी so but 15 should not be. Oh, I'm so sorry. By 15, what I'm writing and you are still saying okay. Upon 15, I'm so sorry. Upon 15. अरे 15d है ना ये? Upon 15. I'm so sorry. I made a mistake. You didn't correct me also. Anyways, it happens. You're so involved that you may not take a note of it in between what I'm doing. Upon 15 comes out to be 8.66. Oh, I'm so sorry. 8.66 is less than d is less than 140 by 15. 140 divided by 15 is 9.33, you know. So the natural number that lies between them is 9. That is why 9 is the answer. So my answer would be 9. As I told you, the answer has to lie between 0 and 9. Sure or not?
Can we proceed to next question? Yes, sir. The sides of a right angle triangle are in arithmetic progression. If the triangle has area 24, then what is the length of the smallest side? Okay. The sides of a right angle triangle are in arithmetic progression. If the triangle has area 24, what is the length of the smallest side? Again, the answer has to lie between 0 to 9. Yes. See, I gave you a motivation in the previous turn, didn't we? I gave you a motivation in the previous turn. Didn't that is look at that. In the previous turn, I gave you the motivation in working out a question, if you recall correctly. That is Three terms of an AP. Haji. Three terms of an AP, sir. या आई गिव यू मोटिवेशन कि अगर 4 टर्म्स लेना है तो आपको ऐसे लेना पड़ेगा, अगर 3 टर्म्स लेना है आपको तो आपको बेटर है कि ए लीजिए, उससे पहले वाला ए माइनस डी लीजिए और उसके बाद वाला ए प्लस डी लीजिए. उससे क्या फायदा होगा कि जब कभी आपको ऐड करना पड़ेगा या कुछ भी करना पड़ेगा तो कैंसिलेशन बड़े आराम से हुआ करेगा. अग्री? सो दिस इज व्हाट द मोटिवेशन दैट आई गेव यू इन द प्रीवियस टर्न एंड दिस विल बी वेरी हैंडी over here in this case as well, I guess. So let me go over to this page directly without resorting to any further clarification. So let's say the three sides of the triangle. Let me make the triangle first. Let me make the triangle first. Let us say that this is the right angle triangle. इसकी सबसे छोटी साइड है क्या? a minus d. a minus d. Slightly bigger side is a, and hypotenuse is the longest of them all, so that's why it should be denoted as a plus d. So first thing is that it should follow the Pythagoras theorem. Pythagoras theorem, and the Pythagoras theorem says that base square plus perpendicular square, that's why a square plus a minus d whole square is gonna be a plus d whole square. Appreciate that, alright. Let me expand this. A square plus a square minus 2ad. Let me write neatly. And this was also JEE 2018 question. This was JEE 2018. So it is not written, but it is JEE 2018. Okay. Minus 2ad plus d square, right, is gonna be a square plus 2ad. Let me write it
slightly below because it will get into the figure, I guess. A square plus 2AD plus D square. Lot of things get cancelled off. You can see at once that things are getting cancelled off. D square, A square, A square. They're all getting cancelled off. Transferred over there, 4AD. 4AD is gonna be A square, right? Rather is okay. So A is equal to 4D. I get to see. A is equal to 4D. Am I correct? अगर A 4D हो गया तो साइड्स क्या हो गई? तो साइड्स हो गई A अगर 4D होगा तो 4D माइनस डी ए 3D हो गया साइड. बोलिए अग्री ना और नॉट. ये कितना हो गया? 4D हो गया और ये कितना हो गया? 5D हो गया. 3D 4D 5D. अब इन्होंने साथ साथ कहा है कि एरिया जो है मेरा वो कितना है? एरिया जो है वो 24 है. और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया बहुत ही आसान होता है. क्या होता है? हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस. तो हाफ इंटू 3D इंटू 4D is equal to 24. That's all. Nothing big about that at all. So that is why 12D square is gonna be 48 or D square is gonna be 4. So D is equal to 2. Appreciate that. D is equal to 2. So what is the smallest side? The smallest side is 3D. Smallest side which is equal to 3D is nothing but gonna be 6 because D is equal to 2. So my answer is 6. It is so simple, and see that it is such a recent question, J 2018. Does it give you confidence? Does it instill confidence in you? कि इस टाइप का क्वेश्चन जे एडवांस में आ रहा है, जे मेंस नहीं, जे एडवांस विच इज द टफर ऑफ द टू, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं. Now you can understand that. Now what is the issue? The issue is that you are finding it easy because you are dealing with the topic. तो अभी आप इसके टच में हैं, इसके सारे नोशंस आपको बहुत ही फ्रेश हैं. चैलेंज क्या होता है? when you take examination, then all the topics of math, all the topics of physics, all the topics of chemistry, you have to have the same level of competence on a single day, right? This is what makes all the difference. One who can develop this level of competence sustains the battle, survives the battle rather. Okay. Let me take one more before I take up another article relating to AP itself, I guess, but okay. So let me go over to one more question. It was asked in 2000 for 4 marks out of 60. So, right, 60 marks का paper था. So now they are saying that the fourth power of common difference of an arithmetic progression with integer entries is integer entry. Notice that. Don't make mistake about it. Small चीजें बहुत difference बनाएंगी. With integer entries, with integer entries is added to the product of any 4 consecutive term of it. Prove that the resulting sum is a square of an integer. So from where this question is? हाँ जी. So is this a question of JE? Yeah, JEE 2000 लिखा तो है. JEE 2000.
Yes. Again, I'll suggest you. That you use the same technique, and when I say technique, you must have understood it, I guess. Yes, sir. Right? The previous term technique, that is this technique which I used, I guess. I mean, where is that all about? Let me locate that. Where was that? Yeah, this is the technique that I am referring to. When you have to take 4 terms in AP, so it is better to take them in this manner, so that when they add up, then they cancel so many terms and we are left out with a clean sum, you know. So this is what it is. So let me come over to my question and work it out. Let's say the 4 consecutive term, product of any 4 consecutive term is added to what? 4th power of common difference. तो लेट्स से जो एपी उसके 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो मैंने लिए वो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। और कॉमन डिफरेंस कितना है ये भी नोटिस कर लीजिए, कॉमन डिफरेंस d नहीं है बेटा, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2d। तो ध्यान रखिएगा, डोंट मेक मिस्टेक अबाउट इट। एंड माइंडेड, it is also written that with integer entry. So all this a and d and everything has to be integer. Don't make mistake. At least 2d has to be integer. d नहीं तो कम से कम 2d हो सकता है, d जो है वो 1.5 हो चलेगा, पर 2d has to be integer, because जब 2d ऐड हो तो एक इंटीजर को वो इंटीजर ही रखे। तो इस बात को नोटिस करिएगा। और जो मेरा ये है, शो दैट द व्हेन 4th पावर ऑफ कॉमन डिफरेंस इज एडेड है, तो मैं लिखता हूँ s लिख लेता हूँ, चलिए उसके लिए रिलेटिंग चीज के लिए। तो क्या ऐड कर रहे हैं? 4th पावर ऑफ कॉमन डिफरेंस। तो 2d इज द कॉमन डिफरेंस की 4th पावर किस में ऐड कर रहे हैं? इन चारों के प्रोडक्ट में। a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। कहना प्रूफ करो भैया कि ये एक स्क्वायर ऑफ इंटीजर है, ये प्रूफ करो एक इंटीजर का स्क्वायर है। ओके, आई स्टार्ट। सो दिस इज 16d रेज़ पावर 4। अब मैंने क्या किया, इनको पेयर में देखा और इनको पेयर में देखा। जब पिंक वालों को पेयर में देखा तो a माइनस 3d इंटू ए प्लस 3d कितना हो जाएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इट विल बी ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर। अग्री और नॉट? और जब इन दोनों ब्लू वालों को पेयर में देखा तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। एम आई करेक्ट और नॉट? आई एडवाइज यू टू ओपन इट अप एंड क्लियरली इसको लिख लीजिए। तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज ए पावर 4, ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर इज माइनस, तो माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। 9d square into a square is 9a square d square. And of course 9d square minus minus plus 9d square into d square is 9d raised to power 4. Having said so, this becomes a raised to power 4 and this becomes minus 10 a square d square. Minus 10 को भी हमने बड़े स्मार्ट तरीके से दिखा, 2 into 5 into ओके ऐसे लिख लीजिए आप, 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 5d स्क्वायर ऐसे लिख लिया हमने ना अपने पर्पस के लिए। और फिर d स्क्वायर को देखिए तो d स्क्वायर इज 16 प्लस 9 इज 25, तो 25 को लिखता हूँ 5d स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलिए अग्री और नॉट? तो कैन यू सी दैट ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ये, वेयर a स्टैंड्स फॉर a स्क्वायर or b stands for what? 5d square. a stands for a square and b stands for 5d square. तो क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखिए a स्क्वायर हाँ a रेज़ पावर 4 माइनस 2ab यस माइनस 2 इंटू a इंटू b एंड माइनस b स्क्वायर। तो दिस बिकम्स इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर होल स्क्वायर। ओ माई गॉड,
Yes, we were supposed to prove that it is square of an integer. All that we require now. अब हमारे पूरा टास्क कितना बचा है, किस पे बचा है, बोलिए बोलिए बोलिए, कि मैं ये प्रूव कर लूं कि ये एक इंटीजर है. अगर ये एक इंटीजर है तो इसका होल स्क्वायर प्रूव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. पर अभी ये कैसे पता कि ये एक इंटीजर है कि नहीं है. अभी आई डू नॉट नो कि वेदर द क्वांटिटी इनसाइड द ब्रैकेट इज इंटीजर और नॉट, तो उसको सेपरेटली मेरे को प्रूव करना पड़ेगा. तो आइए मैं ए स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर को टैकल करूं, क्या ये इंटीजर है कि नहीं है. तो ए स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस 5d square can be written minus 9d square plus 4d square. Am I correct or not? A square minus 9d square can be written as a minus 3d into a plus 3d. Can it be or not? हाँ है ना. प्लस 2d होल स्क्वायर. अब आप नोटिस करिए कि a माइनस 3d वॉज द टर्म ऑफ एन एपी. a माइनस 3d वॉज अ टर्म ऑफ एन एपी. तो ये इंटीजर था कि नहीं. क्यों इंटीजर था भाई? क्योंकि पहले ही कह दिया है कि प्रोग्रेशन विद इंटीजर एंट्रीज, तो इसलिए ये एक इंटीजर था. a प्लस 3d एक इंटीजर था कि नहीं था. a प्लस 3d, तो ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है कि नहीं है. और ध्यान दीजिए मेरी बात को, 2d इज द कॉमन डिफरेंस, तो ये भी एक इंटीजर है. तो इंटीजर इंटू इंटीजर प्लस इंटीजर स्क्वायर इज द इंटीजर और नॉट. दैट मीन्स दिस इज एन integer and thus the resultant quantity is a integer square. That's why it is integer square. Am I correct or not? This is what required to be proved. Excuse me, sir. बोलिए. So how you write a square minus 5d square as a square minus 9d square plus 4d square? अरे माइनस 9 प्लस 4 माइनस 5 होता है कि नहीं बेटा? Yes, sir. आप पूछना चाहते हैं कि आपको मोटिवेशन कहां से मिला? Yes, sir. हमको मोटिवेशन ऐसे मिला कि ए स्क्वायर में 9d स्क्वायर बनाने से ये फैक्टर क्रिएट हो जाएगा जो कि खुद एपी के टर्म्स हैं, इसलिए मैं उनको प्रूव कर पाऊंगा कि इंटीजर इंटू इंटीजर इज इंटीजर. Yes, sir. राइट. Does anything bother you? No, sir. Okay, I think the time is getting almost over, so I need to stop sharing the screen. So I'll stop sharing the screen and come live, and then of course I'll talk to you, and then we'll sign off. So let me Can you see me live now? Yes, sir. Okay, that's great. That's great. So, we have come this way. So almost the AP is getting over. In the next turn, we'll talk about some other issues relating to AP, and then go over to geometric progression. So I'll upload the lecture somewhere in the evening, later in the evening, around 10 o'clock or so, and then you can watch it, and I'll paste the link in the coaching's application, so you can see that. Okay, and you can share with your friends as well. So let me sign off. Goodbye.